ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఢిల్లీలో మెట్రో స్టేషన్లో ఇంటర్నెట్ బంద్పై రాహుల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెట్రో ఇంటర్నెట్ సేవలను ఆపగలిగిన ప్రధాని మోదీ పేపర్ లీక్లను ఆపలేకపోయారంటూ సెటైర్లు వేశారు. విద్యార్థులను కేంద్రం వేధిస్తుందని, విద్యార్థులు 3 డిమాండ్లను కేంద్రం నెరవేర్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు ఉద్యమం ఆగదని తేల్చి చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ. का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday I showed you a young man who has been shot in the eye, and there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए. सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है. इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है. तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू.
you are India's biggest strength, and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? मेट्रो बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, यहाँ तक कि सर और यूनिवर्सिटी आना 15-16 मेट्रो बंद। देखिए, थ्रेटन कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें प्रोटेस्ट में। yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो. हम नहीं हटने वाले हैं. ये नहीं हटने वाले हैं. ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं. इनको देख लो अच्छी तरह. इससे कोई नहीं लड़ सकता. नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट. द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर. थैंक यू. Thank you. Get well soon. Do physiotherapy. Thank you. Do you want me to get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay, thank you guys. Thank you. You want to say something? I don't know.